तो हमारा व्यू ये है कि आई थिंक इन्वेस्टर हैज़ टू डू हिज हर हर ओन होमवर्क, बिकॉज बहुत बार क्या होता है कि प्राइस वैल्यूएशंस वगैरह में सारा पॉजिटिविटी बिल्ड इन हो जाता है. So while the budget numbers are good, but if it is in line with expectations, valuations पे already आ गया. uh, तो इस हिसाब से let's say if an investor wants to take a position in certain stocks, then he or she has to do their own research to understand whether the upside potential is there based on valuations, based on growth expectations. And I think one should also remember that construction companies, for that matter, road construction वगैरह, have been very volatile in the past. The disposable income in the hands of investors will go up. जैसे आपका टैक्स स्लैब्स इंक्रीज हुआ है, तो जो आज 7 लाख रुपीज़ कमाता है, द टैक्स रेट इज़ ज़ीरो फॉर दैट पर्सन विच वॉज 5 लाख रुपीज़ अर्लियर. तो क्लियरली Yeah. डिस्पोजेबल इनकम्स गो अप इन द हैंड्स ऑफ customers, investors, etc. It's up to them how to use this money, whether they are going to use it for consumption or investment. पर अगर आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, तो फॉर एग्जांपल इफ़ आई लुक एट यूएस में बिकॉज ऑफ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स in terms of pension, healthcare coverage, etc., people actually are happy to spend whatever increased earnings they have. In the Indian context, people want to save because our social security is pretty weak as a country. Yeah. And therefore, Yeah. I believe part of the money will actually come and flow into equity markets in search for higher returns and also long term wealth creation. I think मेरे हिसाब से अगर आप देखें तो PLI स्कीम जो लास्ट फ्यू ईयर्स में अनाउंस हुए हैं, वहाँ पे ट्रैक्शन धीरे धीरे बिल्ड हो रहा है. And lot of companies are actually opting for PLI scheme, etc. And वहाँ पे क्या, it's a continuing effect where domestic production will go up, exports will go up. I think this will, as a theme, will play out from a 3 to 5 year perspective. That's something that we are very positive on. So we continue to believe Make in India as a theme will do well for investors. I think firstly, if I look at the debt market is really happy with the budget, because यहाँ पे जो भी populist measures थे, some people were afraid that because this is the last full budget before the general elections of 2024, some people thought that there would be a lot of populist measures in terms of doling out subsidies, etc., which has not happened in this budget. Yeah. I think उस हिसाब से government has been really prudent, and in terms of revenue expenditure, in terms of giving out subsidies, etc. And this has helped the government to adhere to the fiscal deficit numbers that they have given in the past as well. I think the policy has been brought keeping in mind that government wants to promote domestic investment rather than foreign investment. I think that is one motive of the government. Second is that let's say if somebody wants to still invest in foreign securities, uh, then he or she should actually look at investing through domestic mutual funds, which are providing ETFs on foreign securities, foreign indices like Nasdaq, etc. So वहाँ पे I believe this rule will not be applicable because there is no foreign currency remittance outside India. So one can still have exposure to foreign securities through India mutual fund based ETFs and avoid this. I think these small savings through SIP route really make a lot of sense for investors who are actually committed to long term investing, and also it provides liquidity at the right time when there is an emergency. I think this therefore makes a very good case for the investors to continue to be in these. If I look at equity mutual funds last 10 साल 15 साल 20 साल, the money has grown at a 13-14% annualized return, which is a pretty healthy rate of return. While in other asset classes, the rate of return has possibly been much lower than this. Yeah. So I think uh, I believe that uh, this is the reason why more money should actually flow into equity markets, considering the past historical track record of returns that have been. So, in fact, my investing journey started in the year 2006.
So it's been almost around 16 years, 16, 17 years. I think initially I've seen ups and downs of the markets, 2006, 7, 8 rally, then correction, etc. A lot of learnings over the years. Um, and I think a big learning for me personally is that uh, when we look at investing, many a times we are looking at the we are looking to buy stocks which are cheap. लेट्स से जहाँ पे प्राइस टू बुक मल्टीपल सस्ता है, प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल सस्ता है, लॉट ऑफ स्क्रीनर्स आर रन, बहुत स्क्रीनर्स लगाते हैं टू अंडरस्टैंड कौन सा सस्ता स्टॉक मिल रहा है, जिसको बोलते हैं सिगार बट इन्वेस्टिंग, जो वॉरेन बफेट हैज़ कॉइन्ड दिस वर्ड, सिगार बट इन्वेस्टिंग. सो सिगार का बट होता है जिसमें थोड़ा रह गया है, तो वी वुड वांट टू यूज़ दैट कम्प्लीटली. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नम्रता अरोरा है एंड वेलकम बैक टू अनदर वंडरफुल एपिसोड ऑन म्यूचुअल फंड्स की बात. जैसे आप सब जानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स की बात में हम ग्लोबल और इंडियन इकोनॉमिक कंडीशंस, कमोडिटीज, स्टॉक मार्केट्स एंड ऑफ कोर्स म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करते हैं. और हर एपिसोड में वी ट्राई टू गेट अ वेरी रिनाउंड पर्सनालिटी, समवन विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन द म्यूचुअल फंड एंड इक्विटी स्पेस to answer our questions. तो आज भी हमारे साथ we have someone very famous in the mutual fund industry. His name is Mr. Vishal Gajwani. तो Mr. Vishal Gajwani is a fund manager for equity in Aditya Birla Sun Life Mutual Fund. He comes with over 16 years of experience in equity research and portfolio management. Mr. Vishal को extensive experience है in managing equity portfolios across investment cycles. He along with his team is accredited with conducting differentiated market studies, capturing interesting insights on various aspects of investing, translating into superlative performance track record. Mr. Vishal Gajwani is a gold medalist chartered accountant and holds a master's degree in commerce from MS University of Baroda. Vishal received 4 gold medals, including the Chancellor's Gold Medal for topping the Masters of Commerce exam. He's also a CFA charter holder from the CFA Institute, the Global Association of Investment Professionals, USA. Hello everyone and welcome back to Mutual Funds की बात. जैसे आप सब जानते हैं कि हमारा द यूनियन बजट वाज अनाउंस्ड रिसेंटली. तो आज जो है हमारा सारा डिस्कशन इज गोइंग टू बी अराउंड द यूनियन बजट एंड विद अस वी हैव विशाल गजवानी. हेलो विशाल, वेलकम टू म्यूचुअल फंड्स की बात. So let's get started with the questions. So I truly think कि finally अब the wait is over. हमने इस साल का बजट आ गया है और अगर हम this is pretty much the last budget of the current government before the central elections next year. और काफ़ी experts का ये opinion है कि ये एक no harm budget है. At the same time इसमें कोई ऐसे populist measures नहीं है, keeping the state and central elections in mind. तो probably वो एक अच्छी बात है. हम सबको budget updates मिलते हैं, जैसे ही budget खत्म होता है summarizations, analysis शुरू हो जाता है at multiple places. लेकिन आज जो है हम स्पेसिफिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ द यूनियन बजट ऑन म्यूचुअल फंड्स एंड एक्विटी और इसका एज इन्वेस्टर्स हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा. सो आई थिंक वन ऑफ द एरियाज जहाँ पे सबसे काफ़ी फोकस दिया गया है इस बजट में, दैट इज ऑन इंफ्रा स्पेंडिंग. एंड वी आर एक्सपेक्टेड टू स्पेंड क्लोज टू 10 लाख करोड़ बाय डिफरेंट मिनिस्ट्रीज दिस ईयर और ये पिछले साल की कंपैरिजन में काफ़ी बड़ा जंप है. So ये जो increased spending है on sectors like infrastructure, energy and push to banking and affordable housing sector, तो आपको क्या लगता है विशाल कि इसकी वजह से जो equity fund investors हैं उनको क्या benefit होगा? Right. I think ये जो infrastructure spending इस साल अनाउंस हुआ है जो 33% ज़्यादा है compared to last year. This is again अगर आप देखेंगे last year का infrastructure spending itself was 30% higher than previous year. तो क्यूमुलेटिवली अगर हम देखेंगे लास्ट 4-5 साल का ट्रेंड अगर देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर केपेक्स बहुत ही तेज़ी से बढ़ा है. एंड इस साल अगर हम देखेंगे तो रेलवेज एंड रोड्स इन दोनों में इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इज़ 25% प्लस. तो जो भी केपेक्स इंक्रीज़ हुआ है वो मोस्टली जा रहा है रोड्स में, रेलवेज़ में. प्रधानमंत्री आवास योजना एक और स्कीम है जिसका बजट आउटले 66% से बढ़ा है इस साल में. एंड अगेन उसके जो बेनिफिशरीज हैं वो रहेंगे कंपनीज इन द सेक्टर्स विच आर लिंक्ड टू हाउसिंग कंस्ट्रक्शन.
जैसे सीमेंट हो गया, मेटल्स हो गया, बिल्डिंग मटेरियल्स हो गया, तो ये सारे कंपनीज़ को बेनिफिट होना चाहिए। तो एक तो रेलवेज एंड रोड्स कंपनीज़ को बेनिफिट होना चाहिए। सेकंड इज़ बिल्डिंग मटेरियल कंपनीज जो हाउसिंग कंस्ट्रक्शन में हैं, उनको बेनिफिट रहेगा बिकॉज ऑफ दिस इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग विच इज़ गोइंग अप। Okay. So how do you think this will benefit the equity investors in the sense, agar I as an investor, I'm looking at this particular part, तो क्या मुझे लगता है कि जो sectors आपने mention किए मुझे उनमें invest करना चाहिए? Yeah, what is your take on this? Yeah, that's an important question from investors perspective. तो हमारा व्यू ये है कि आई थिंक इन्वेस्टर हैज़ टू डू हिज हर ओन होमवर्क, Sure. बिकॉज बहुत बार क्या होता है कि प्राइस वैल्यूएशंस वगैरह में सारा पॉजिटिविटी बिल्ड इन हो जाता है. So while the budget numbers are good, but if it is in line with expectations, valuations पे already आ गया. uh, तो इस हिसाब से let's say if an investor wants to take a position in certain stocks, then he or she has to do their own research to understand whether the upside potential is there based on valuations, based on growth expectations. And I think one should also remember that construction companies for that matter, road construction वगैरह, have been very volatile in the past. Yeah. And उनका interest rate risk भी ज़्यादा रहता है, because in a rising interest rate scenario, construction companies get impacted because of the debt on the balance sheet. Yeah. So there are multiple moving parts to it. Budget is just one part of the entire jigsaw puzzle, and weightage possibly would not be more than 10% in deciding the outlook for the company. Sure. Okay. Okay. Perfect. That sounds good. Okay. तो अब अगर हम दोबारा यूनियन बजट की बात करें तो इसमें प्रपोज किया गया था टू लिमिट द इनकम टैक्स एग्जेम्पशन ऑन द प्रोसीड्स ऑफ हाई वैल्यू लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज. तो आपको क्या लगता है कि इसकी वजह से जो म्यूचुअल फंड्स हैं क्या उसमें इनफ्लोज बढ़ेंगे एज मोर एचएनआईज कुड नाउ लुक एट दिस इंडस्ट्री? Yeah, yeah. So I think, of course, life insurance policies जो high ticket life insurance policies हैं 5 lakh rupees plus, वहाँ पे taxation has been introduced. Earlier these were exempt completely. The proceeds from these policies was exempt. अभी उसमें taxation आ गया है. So a lot of HNI investors जो वहाँ पे जा रहे थे invest करने के लिए, they would want to think of it whether वहाँ पे invest करना है या कहीं और. बट ट्रेडिशनली अगर देखा जाए तो वहाँ पे जो इन्वेस्टर्स जा रहे थे, दोज वर अर्लियर इन्वेस्टिंग इन फिक्स्ड डिपॉजिट सिक्योरिटीज़, एफडीज़ में, जहाँ पे टैक्स रेट वॉज मैक्सिमम मार्जिनल टैक्स रेट फॉर एचएनआई इन्वेस्टर्स. वहाँ से पैसा निकल के इंश्योरेंस में जा रहा था. एंड बिकॉज इंश्योरेंस में जहाँ पे टैक्सेशन अभी इंट्रोड्यूस किया है वो नॉन पार्टिसिपेटिंग ट्रेडिशनल पॉलिसीज़ हैं जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ फिक्स्ड. So there is no uncertainty on the returns available on those products. While equity mutual funds come with uncertainty in terms of what is the return expectation, etc. So I don't think these HNI investors who are looking at fixed returns will shift to equity mutual funds just because those fixed returns have become taxable. But at the same time, if I look at equity mutual funds, हमारा जो hybrid category जो है within equity mutual funds, that's actually gaining a lot of traction in the last many years. If I look at Balanced Advantage Fund, which I manage along with my co-colleagues on the debt side, ये जो कैटेगरी है बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी, ये आज से 5 साल पहले इसका साइज़ था 30,000 करोड़, 30,000 करोड़. नाउ इट हैज़ बिकम 2 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ से ऊपर चला गया है. सो almost 7-8 times appreciation in 5 years. So clearly a lot of investors are coming in balanced advantage category, which is equity taxation, and वहाँ पे risk थोड़ा कम है. Pure equity funds के comparison में risk कम है, returns are decent, and tax implication is lower. Sure. So that works more like a win-win for everyone. Yeah. Right. Okay. So Vishal, I think one of the big reliefs was for the country's growing middle class, and I think पिछले 2 दिनों से हम सब यही बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने जो है इनकम टैक्स स्लैब्स को दोबारा रीजेक्ट किया है, राइट, स्पेशली अंडर द न्यू टैक्स रेजीम.
जहाँ पे अब देयर बी नो टैक्स ऑन इनकम अप टू 7 लाख रुपीज, जो 5 लाख पहले लिमिट होती थी. और ये डिसीजन प्रॉब्ली इज मोर हेल्पफुल फॉर पीपल हु आर अर्निंग, लेकिन वो जो है इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं या सेक्शन 80 या सेक्शन 24 का बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं. तो इन योर व्यू क्या जो इन्वेस्टर्स हैं उनको इस टैक्स रीजेक्ट की वजह से बेनिफिट होगा? से म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स विल दे बेनिफिट आउट ऑफ दिस? Right. I think, Namrata, the first thing is that the disposable income in the hands of investors will go up. जैसे आपका टैक्स स्लैब्स इंक्रीज हुआ है, तो जो आज 7 लाख रुपीज़ कमाता है, द टैक्स रेट इज़ ज़ीरो फॉर दैट पर्सन विच वॉज 5 लाख रुपीज़ अर्लियर. तो क्लियरली Yeah. डिस्पोजेबल इनकम्स गो अप इन द हैंड्स ऑफ customers, investors, etc. It's up to them how to use this money, whether they are going to use it for consumption or investment. पर अगर आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, तो फॉर एग्जांपल इफ़ आई लुक एट यूएस में बिकॉज ऑफ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स in terms of pension, healthcare coverage, etc., people actually are happy to spend whatever increased earnings they have. In the Indian context, people want to save because our social security is pretty weak as a country. Yeah. And therefore, I Yeah. believe part of the money will actually come and flow into equity markets in search for higher returns and also long-term wealth creation. Okay. So that's a good sign then. That's a good thing for the equity market, is what you're saying. Okay. Yeah. Okay. So now, there were a lot of measures that were taken to support manufacturing. Or I think हमने past में भी देखा, जैसे PLI schemes launch हुए थे to support manufacturers to set shops in India. तो अगर हम ये budget की बात करें, तो how will this budget benefit sectoral and thematic funds? Especially say in the themes like manufacturing, transport, logistics, जो which have turned quite attractive. And what are some of the sectors आपके हिसाब से, what are some of those sectors that an investor could focus on? And so another question is, ये जो budget का impact है, क्या ये really last करेगा, right? So I think just one or two questions in that one question that I have for you. Right. Sure. No, I think it's an important question because अभी इतने सारे announcement आए हैं बजट में, eventually which are the beneficiary sectors and how long the benefit will last is an important question. I think मेरे हिसाब से अगर आप देखें तो PLI स्कीम जो लास्ट फ्यू इयर्स में अनाउंस हुए हैं, वहाँ पे ट्रैक्शन धीरे धीरे बिल्ड हो रहा है and lot of companies are actually opting for PLI scheme, etc. And वहाँ पे क्या, it's a continuing effect where domestic production will go up, exports will go up. I think this will, as a theme, will play out from a 3 to 5 year perspective. That's something that we are very positive on. So we continue to believe Make in India as a theme will do well for investors. इस बजट में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देयर वाज अ फोकस ऑन एनर्जी ट्रांजिशन इन्वेस्टमेंट्स, जहाँ पे गवर्नमेंट ने थोड़ा कैपिटल आउटले दिया है टू सपोर्ट द न्यू एज industry of green energy, which is green hydrogen, etc. Or apart from that, there is also viability gap funding जो दिया गया है, that is for battery energy storage systems, including lithium ion cells. So I think these are some of the emerging industries which can become big going forward from a possibly 5 to 10 years perspective. जैसे आज की तारीख में कोई टू व्हीलर ले रहा है, so it is more likely that that person will choose an electric two-wheeler rather than a petrol one. Normal one. And possibly a few years out, when we are buying a four-wheeler, we might want to buy an electric one rather than a regular one, because वहाँ पे cost savings can also happen. And with the battery prices coming down, that will become much more and more affordable as we go along. Jैसे if I talk about solar power, solar energy today, it is actually very competitive vis-a-vis traditional sources of energy, which was not the case 10 years back. Similarly, 5 to 10 years out, it is possible that four-wheeler electric vehicles might end up being cheaper on a total cost of ownership for the consumer. I think this is an emerging area जहाँ पे बजट में आउटले हुआ है and support of the government is available for this sector. But as an investor, we need to take a call on the balance sheet quality,
business quality, promoter quality before making an investment in a particular company. But from a sector perspective, we believe there are tailwinds for the sector. Sure, sure. So of course, I mean, fundamental analysis to हर कोई करेगा ही when they are, deciding a stock, a particular company they want to invest in, and I hope that's the case. But of course, sectoral strategy, I think it makes sense. Thank you so much. We completely understand what you're trying to say. Okay, so अब अगर हम थोड़ा बात करें, so the finance minister also said that इस साल का जो revised fiscal deficit है, that's going to be 6.4% of the GDP, adhering to the budget estimate. लेकिन जो 24 का जो fiscal deficit estimate है, that's set at 5.9% of GDP. तो आपके ओपिनियन में इसकी वजह से जो debt mutual fund investors हैं, उनको कैसे benefit होगा? Right, right. I think firstly, if I look at the debt market is really happy with the budget because यहाँ पे जो भी populist measures थे, some people were afraid that because this is the last full budget before the general elections of 2024, some people thought that there would be a lot of populist measures in terms of doling out subsidies, etc., which has not happened in this budget. I think उस हिसाब से government has been really prudent and in terms of revenue expenditure, in terms of giving out subsidies, etc. And this has helped the government to adhere to the fiscal deficit numbers that they have given in the past as well. 5.9% का जो number है, that's very credible number. Even the maths behind this number is looking credible. Government ने जो tax revenues assume किया है, those are looking realistic. These are not aggressive numbers. And I think this has led to the debt markets taking it very positively. The yields and the 10 years GSEC yields have actually come off after the budget, which is indicating that the debt markets are very happy with the budget. And I think they should also help address the concern of inflation because since the budget is not populist, inflation should be under control. Okay. So this is a good thing for the debt investors is what you're saying. Absolutely. Okay. Okay. तो अगर हम पिछले कुछ साल की बात करें तो many investors have been investing in international stocks and I'm sure you've seen the frenzy around international investing, international mutual funds and so on, right? लेकिन जब हम international funds या international markets में invest करते हैं, one key risk is the exchange risk. लेकिन अब जो है एक tax angle भी आ गया है उसमें. So the union budget has proposed a hike in TCS, which is tax collection at source on overseas travels, fund remittance out of India to 20%. इसकी वजह से जो है investing in foreign stocks, चाहे वो stocks हो या mutual funds, have become more expensive. तो ये जो tax collection at source होता है, ये होता क्या है? So can you just tell us what is that? और is there any way for investors to avoid this? तो अगर मैं international funds या stocks में invest कर रही हूँ, तो क्या मैं ये tax को avoid कर सकती हूँ? Even though you can claim the refund, लेकिन फिर भी आपका जो tax amount है वो block हो जाता है, right? And that could be a challenge for the investors. Right, right. And thanks for clarifying this, Namrata, because some people are under the impression that ये जो 20% TCS आया है, that is actually tax being collected by the government. But this is इसका credit मिलने वाला है वापस to the investor. So this is basically going to be reflected in your tax credit, and this is not an actual tax outgo. This is just a tax collected in advance for the actual income that might be generated. Now, having clarified that, I think यहाँ पे it is I understand where you are coming from. It will impact cash flows of investors because यहाँ पे 100 रुपया इन्वेस्ट किया था, उस पर रिटर्न जितना मिलता था आज की तारीख में 120 करना पड़ेगा फॉर द सेम रिटर्न विच इज़ टू बी रिसीव्ड. आई थिंक द पॉलिसी हैज़ बीन ब्रॉट keeping in mind that government wants to promote domestic investment rather than foreign investment. I think that is one motive of the government. Second is that let's say if somebody wants to still invest in foreign securities, then he or she should actually look at investing through domestic mutual funds, which are providing ETFs on foreign securities, foreign indices like Nasdaq, etc. So वहाँ पे I believe this rule will not be applicable because there is no foreign currency remittance outside India.
So one can still have exposure to foreign securities through India mutual fund based ETFs and avoid this payout. Okay. Okay. Wow, wonderful. Okay. So I do hope that clarifies, the doubt for a lot of investors क्योंकि काफी international investing, जो investors करते हैं, उनको I'm sure they had this big doubt. So thank you for that. Okay, तो अब अगर हम देखें in the recent past जो traditional households होते हैं traditional Indian households, they have been shifting their investments from say real estate and gold जो पहले बहुत famous investments होते थे to more modern investments like financial assets like mutual funds. तो आपको क्या लगता है कि इस budget के बाद you think जो these the middle class households are they going to be encouraged more to invest in mutual funds? Yeah, I think one good thing in the budget is that the taxation, capital gain taxation on equities continues to be the same. It hasn't changed, There were yes. right. So a certain segment of the market believed that the short-term capital gain tax, which is for 1 year, might go up to 2 years. So had that happened, then lucrativeness of equities may have gone down, which has not happened. तो उस हिसाब से आई थिंक एक्विटीज इवन टुडे आर given preferential treatment versus other asset classes and that continues. Even long term capital gain tax rate जो है सिर्फ 10% है, while for other asset classes like real estate, gold, the tax rate is much higher. Yeah. But I think apart from that, जो real estate in particular जो issue है, that is liquidity, which is a big issue there, and ticket size which is pretty big. So उस हिसाब से I think these small savings through SIP route really make a lot of sense for investors who are actually committed to long-term investing, and also it provides liquidity at the right time when there is an emergency. I think this therefore makes a very good case for the investors to continue to be in these in equity mutual funds. Yeah, yeah. I mean, I have seen the switch myself. My parents who are in their 60s, from being hardcore real estate investors, आज वो भी बहुत ज़्यादा उनका investment equity में करते हैं, and they've been doing it for the last 10 years. So I see that shift happening in a big way, which is pretty good, which is amazing actually. So yeah. Okay. Yeah. So अब अगर हम for a long time लोग जो है tax saving investments में invest करते थे, and to a large extent काफी investors जो है अपना पैसा सिर्फ tax saving के लिए ही invest करते थे. That was their investment for the year, right? And अभी भी अगर हम देखें तो investors के लिए tax saving is still a big part of their investment journey, right? लेकिन अगर हम इस बजट का इंक्लिनेशन देखें दैट्स मोर टुवर्ड्स द न्यू इनकम टैक्स रेजिम, क्योंकि जो भी चेंजेस हुए हैं वो न्यू टैक्स रेजिम पे हुए हैं, उसको डिफॉल्ट टैक्स रेजिम भी बना दिया गया है. सो इसकी वजह से जो है अब जैसे काफ़ी इन्वेस्टर सेक्शन 80C में इन्वेस्ट करते थे, ELSS एंड सो ऑन, तो क्या आपको लगता है कि अब सेक्शन 80C का रिडक्शन तो है ही नहीं नए टैक्स रेजिम में, तो डू यू थिंक कि इसकी वजह से क्या होगा, लाइक व्हाट इज गोइंग टू बी द इम्पैक्ट बिकॉज ऑफ more focus on the new tax regime? Right, right. I think you're right. Earlier, जो savings होता था for an typical Indian household, it was more driven by tax benefits rather than the merits of the product itself. I think that will shift going forward because there is a need for making an investment. As I mentioned, social security is not great in the country, and therefore people would want to invest for healthcare, education, for retirement, etc. That need remains there, and investments perspective, if they are driven more by merit of the investment, it is better for the industry rather than being driven by tax consideration. उस हिसाब से I think those categories of funds or those investment avenues which are doing better from a longer term perspective and which are beating the markets, वहाँ पे investors का पैसा ज़्यादा जाएगा, एंड जहाँ पे ट्रेडिशनल रिटर्न्स हैवन बीन ग्रेट, तो वहाँ पे पैसा कम जाना चाहिए. फॉर एग्जांपल, इफ़ आई लुक एट इक्विटी म्यूचुअल फंड्स लास्ट 10 साल, 15 साल, 20 साल, द मनी हैज़ ग्रोन एट अ 13-14% annualized return, which is a pretty healthy rate of return. While in other asset classes, the rate of return has possibly been much lower than this. Yeah. So I think I believe that
this is the reason why more money should actually flow into equity markets, considering the past historical track record of returns that have been generated. Yeah. Well, like we always say कि investments जो आप सिर्फ tax saving के लिए नहीं करते हैं, right? You invest money for your financial goals and to achieve your dreams and aspirations. And I hope that mindset is changing and people are not looking at investments purely from tax saving point of view. Yes. So, Vishal, okay, so we've spoken so much about the budget. We have discussed about how it will impact the investors. लेकिन अब जो है हम थोड़ा आपके बारे में जानना चाहेंगे, हम आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे, considering I'm sure you've been an investor for over a decade. So can you tell us कि आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी कैसी रही and how did you manage to, you know, wade through the tough times and, you know, how has your journey been as an investor? Right. So, in fact, my investing journey started in the year 2006. So it's been almost around 16 years, 16, 17 years. I think initially I've seen ups and downs of the markets, 2006, 7, 8 rally, then correction, etc. A lot of learnings over the years. And I think a big learning for me personally is that when we look at investing, many a times we are looking at the we are looking to buy stocks which are cheap. Let's say जहाँ पे price to book multiple सस्ता है, price to earnings multiple सस्ता है, a lot of screeners are run, बहुत screeners लगाते हैं to understand कौन सा सस्ता stock मिल रहा है, जिसको बोलते हैं cigar butt investing, जो Warren Buffett has coined this word, cigar butt investing. So cigar का butt होता है जिसमें थोड़ा रह गया है, so we would want to use that completely. But eventually what one realizes as an investor is that this is not a sustainable way of investing. One has to move on to businesses which are much more sustainable. Quality of business, quality of management are possibly very important in deciding how much returns will be made over a period of time. Therefore, I think valuation is one part which is important, and therefore one shouldn't ignore it completely, but one shouldn't make it 100% of his focus as well. So one has to look at all three parameters: management quality, business quality, and valuations. All three one has to look at it to decide where to invest, and I think that's the key to success, and that's my learning over the years. Okay, thank you so much. And Vishal, just the last question: would you have some book recommendations for our investors? Yeah. So I think one of the recent books which I read and which I believe is very, very apt for any investor is a book written by Mr. Morgan Housel, which is called The Psychology of Money. Yeah. He gives a lot of insights in terms of how the money grows over a period of time and how patience. Oh, wow. So you have a copy of that book already with you. And I love this book. The kind of concepts, the simplicity with which the concepts are explained are phenomenal. Yeah. Okay. Perfect. So this is comes in the must-read category. Perfect. Thank you so much. So thank you so much, Vishal. We had a great time interacting with you, and I'm sure हमारे सारे investors को, सारे viewers को बहुत learning मिली है इस particular session से. So thank you so much for all your time, and we'll see you soon. Thank you. Yeah, my pleasure. Take care. See you. Take care. Bye-bye. Wow, what a wonderful and knowledgeable conversation that was with Mr. Vishal. I hope आप सबको ये episode अच्छा लगा हो, and I hope you guys are eagerly waiting for the next one. तो quickly जो points हमने discuss किए थे वो मैं आपके लिए summarize कर देती हूँ. तो सबसे पहले हमने ये discuss किया कि finance minister ने announce किया है a higher spending on sectors like infrastructure and energy and a higher focus on sectors like banking and affordable housing. तो मिस्टर विशाल सेज कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर का कैपेक्स है वो काफी जल्दी बढ़ रहा है और अफोर्डेबल हाउसिंग में भी फोकस हैज बीन क्वाइट कंसिस्टेंट. और अगर हम देखें तो देयर हैज बीन अ अपसर्ज ऑफ 66% इन प्रधानमंत्री आवास योजना टू एन आउटले ऑफ 79,000 crores. लेकिन अगर एक इन्वेस्टर को इन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना है तो उनको अपना खुद का रिसर्च करना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग. फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि इस यूनियन बजट में एक प्रपोजल ये भी था कि जो मेच्योरिटी प्रोसीड्स होते हैं फ्रॉम अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, जिन पॉलिसीज में जो एनुअल प्रीमियम होता है वो 5 लाख से ज्यादा का होता है,
ऐसे जो मेच्योरिटी प्रोसीड्स हैं उनको टैक्सेबल किया जाएगा विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। तो मिस्टर गजवानी सेज कि ऐसे जो HNI इन्वेस्टर्स होते हैं वो पहले जो है फिक्स्ड डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट करते थे एंड देन दे शिफ्टेड टू नॉन पार्टिसिपेटिंग ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स, वन ऑफ कोर्स फॉर फिक्स्ड रिटर्न्स एंड सेकंड बिकॉज जो मेच्योरिटी प्रोसीड्स होते थे वो टैक्स फ्री होते थे। तो ऐसे इन्वेस्टर्स शायद इक्विटी में शिफ्ट ना हो बल्कि दे में स्विच टू हाइब्रिड फंड्स लाइक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स। तो जो बैलेंस एडवांटेज फंड्स होते हैं उनमें रिस्क कम होता है एंड दे गिव डिसेंट रिटर्न्स। फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि गवर्नमेंट ने जो है ग्रोइंग मिडिल क्लास के लिए जो इनकम टैक्स स्लैब्स हैं अंडर द न्यू टैक्स रेजिम उनको पूरा रिजेक्ट किया है और अभी अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है तो आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, जो ये लिमिट पहले 5 लाख की होती थी। तो मिस्टर विशाल सेज कि अगर देखा जाए तो अब लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा रहेगी। इसका मतलब ये है कि अब लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा कि ये जो एक्स्ट्रा इनकम उनके पास है वो या तो वो खर्च करें या फिर उसको सेव करें और इन्वेस्ट करें। तो मिस्टर विशाल सेज कि इन ऑल प्रोबेबिलिटी ये जो एक्स्ट्रा इनकम है लोगों के हाथ में वो इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे लोग टू रियली क्रिएट वेल्थ इन द लॉन्ग टर्म एंड टू जनरेट वेल्थ फॉर देयर फाइनेंशियल गोल्स। क्योंकि देखा जाए तो इंडिया में जो सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है वो इतना स्ट्रांग नहीं है। फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि क्या इस बजट का इम्पैक्ट सेक्टरल और थीमेटिक फंड इन्वेस्टर्स पे होगा एंड विल दे बेनिफिट आउट ऑफ इट, कंसिडरिंग ऐसी जो थीम्स हैं जैसे मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स वो काफी अट्रैक्टिव हो गई हैं। सो मिस्टर गजवानी सेज कि अगर देखा जाए तो बहुत सारी कंपनीज जो है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स PLIs का बेनिफिट उठा रही हैं, जिसका मतलब ये है कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ेगा, जिसका मतलब ये है कि इंडियन एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। तो इसी वजह से दिस सेक्टर डेफिनेटली सीम्स अट्रैक्टिव। ऑल्सो अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट का फोकस मेक इन इंडिया थीम पे बहुत ज्यादा है। गवर्नमेंट हैज ऑल्सो इंक्रीज आउटले ऑन ग्रीन हाइड्रोजन एंड बैटरी टेक्नोलॉजी which is a very positive sign for electric vehicles। तो इसीलिए ये सेक्टर अच्छा करने का एक्सपेक्टेशन है, लेकिन अगर इन्वेस्टर्स को इन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना है तो उनको इंडिविजुअली कंपनीज के ऊपर अच्छे से रिसर्च करनी पड़ेगी। फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि गवर्नमेंट ने इस बजट में ये प्रपोज किया है कि जो TCS है विच इज टैक्स कलेक्शन एट सोर्स उसको हाइक किया जाए फॉर ओवरसीज ट्रैवल एंड फॉर फंड रेमिटेंसेज आउटसाइड ऑफ इंडिया टू 20%। तो मिस्टर गजवानी सेज कि गवर्नमेंट ये ऐसा इसलिए कर रही है बिकॉज दे वांट टू प्रमोट इक्विटी इन डोमेस्टिक इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स ओवर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। लेकिन ऐसे इन्वेस्टर्स जिनको इंटरनेशनल इक्विटी में इन्वेस्ट करना है वो इंडियन म्यूचुअल फंड्स, इंडियन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में जो ETFs होते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, जो फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं उसके जरिए जो है TCS को अवॉइड कर सकते हैं। फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि जो इंडियन हाउस होल्ड होते हैं वो जो है काफी पैसा जो है टैक्स प्लानिंग के पर्पस की वजह से ही इन्वेस्ट करते थे इन इक्विटी थ्रू ELSS फंड्स। लेकिन अब जो है इस बजट में ज्यादा बड़ा फोकस है ऑन द न्यू टैक्स रेजिम। तो क्या इसकी वजह से इन्वेस्टर्स जो है ELSS फंड्स में अब इन्वेस्ट नहीं करेंगे? तो मिस्टर गजवानी सेज कि जो इंडियन हाउस होल्ड्स की बात हम कर रहे हैं वो जो है ऑफ कोर्स पहले फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट सिर्फ टैक्स प्लानिंग के नाम पे करते थे, लेकिन अभी जो है इन्वेस्टर्स को इक्विटी का महत्व, इंपॉर्टेंस पता चल रही है एंड इन्वेस्टर्स अंडरस्टैंड कि इक्विटी जो है आपको इन्फ्लेशन बीट करने में मदद कर सकता है, आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेशन क्रिएट करने में मदद कर सकता है। तो इसलिए एक्सपेक्टेशन है कि इक्विटी में जो है उतना इन्वेस्टमेंट्स कम नहीं होगा। फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि अभी जो बहुत सारे इंडियन हाउस होल्ड्स हैं वो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस लाइक रियल एस्टेट और गोल्ड से अब शिफ्ट होके फाइनेंशियल एसेट्स लाइक म्यूचुअल फंड्स में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मिस्टर गजवानी सेज कि अगर देखा जाए तो SIP के जरिए अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं तो आप छोटे अमाउंट से जो है यू कैन स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट्स एंड यू कैन बिल्ड वेल्थ ओवर द लॉन्ग टर्म इवन विद स्मॉलर इन्वेस्टमेंट अमाउंट्स। लेकिन अगर हम रियल एस्टेट की बात करें तो एक तो उसमें लिक्विडिटी का बहुत चैलेंज रहता है एंड ऑल्सो जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है वो बहुत हाई होता है। फिर हमने मिस्टर गजवानी से उनकी कुछ लर्निंग्स के बारे में बात करी इन दी इक्विटी स्पेस एंड मिस्टर गजवानी सेज कि अगर देखा जाए तो जनरली जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिनको मार्केट ने डिस्कार्ड कर दिया है और वो स्टॉक्स जो है डीप डिस्काउंट्स टू बुक वैल्यू पे अवेलेबल होते हैं। इसको सिगार बट इन्वेस्टिंग बोला जाता है। लेकिन मिस्टर गजवानी सेज कि यू शुड लुक फॉर सच स्टॉक्स जिनका क्वालिटी ऑफ बिजनेस, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट अच्छी है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन वी ऑल्सो आस्क्ड हिम सम बुक recommendations and he recommended the book by Morgan Housel called The Psychology of Money to learn more about taking financial decisions. So I hope this episode was useful. I hope all of you had some amazing learnings. I hope all of you understood about the budget.
So of course, do look out for the next episode where we'll have another expert joining us. So please do like this video, share it with everyone, and of course subscribe to the Grow Mutual Fund channel. Thank you so much for watching. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.